So, hi everyone, welcome to Saral Shiksha Online again. And in this video, I'll be discussing about theorem 1.4 that says that root 2 is irrational. Again, theorem 1.4 of class 10, chapter 1, real numbers. So, देखते हैं कैसे prove करते हैं. Fine. So yes, theorem 1.4 is root 2 is irrational. इसका proof देखते हैं. हमेशा ऐसे proofs को हम contradiction के साथ prove करेंगे. How? Starting में I'll just assume that root 2 is a rational number. So yes, let it be a rational. Now if this is a rational number, I know it can be represented as P by Q. Right? We know that where Q is non-zero and P and Q are co-prime numbers. Co-prime numbers क्या थे? अगर आपको ध्यान हो, हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियोस में कि co-prime numbers वो numbers होते हैं जिनका कि कोई common factor नहीं होता. Right? तो जब इनका कोई common factor नहीं है, that means it is the simplest form. So yes, I can write root 2 as P by Q, which on rearranging I will get Q root 2 as P. And if I square on both the sides, I'll get 2q square is equal to p square. Now friends, it clearly says that 2 is the factor of p square here, right? So if 2 is the factor of p square here, it means 2 divides p square. Correct? And if you remember, हमने theorem 1.3 किया था. अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप मेरे जो links हैं, suggested links, वहां जाके check कर सकते हो. उसमें हमने पढ़ा था अगर कोई नंबर p स्क्वायर को डिवाइड करता है दैट मींस वो p को भी डिवाइड करता है. सो यस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 we say that 2 divides p as well, which means that 2 is the factor of p. Correct. Now it means I can write that p is equal to 2r. R can be any integer, right? Here r you can take any integer. So yes, p will be equal to 2r because 2 is a factor of p. Fine. So now अब हम क्या करेंगे, अपने इस वाले एक्सप्रेशन में जो हमने लिखा है 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें हम इसको पुट कर देंगे. राइट? तो p इक्वल टू 2r हमने यहाँ पे पुट किया एंड देन व्हाट विल गेट, वी गेट 2q स्क्वायर एज 4r स्क्वायर. राइट? आपके पास मिल गया 2q square equal to 4r square, and on simplification what you will get q square as 2r square. अब देखिए यहाँ पर भी क्या मिला हमें, यहाँ पे 2 हमारा फैक्टर हो गया q square का. करेक्ट? बिकॉज व्हेन आई राइट अ नंबर और उस नंबर के कुछ मल्टीप्लिकेशन में मैं उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ, इट मीन्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं. इफ आई कैन राइट 6 एज 2 multiplied by 3, it clearly says that 2 and 3 are factors of 6, right? Also it says that 2 divides 6 or 3 divides 6. Correct? So that means in this case I can write 2 divides q square. So if 2 divides q square, so likewise जैसे आपने यहाँ पे किया था according to theorem 1.3, so yes, according to theorem 1.3 2 जो है वो q को भी divide करेगा. So we have 2 divides p and then 2 divides q. But what is this? हमने तो डिस्कस किया था कि p and q को प्राइम नंबर्स हैं और को प्राइम नंबर्स के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता. बट यहाँ पे तो 2 हमें कॉमन फैक्टर दिख गया, which clearly says that our assumption was wrong. So this is clearly a wrong assumption. And on contradiction आप क्या लिखोगे कि with the contradiction आपका root 2 जो है वो rational नहीं है, root 2 is an irrational number. So friends, I guess बहुत ही easy सा simplify कर दिया मैंने, बहुत ही easily इसका proof दे दिया आपको. अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब भी बताइए, नहीं लगता तब भी बताइए, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें. राइट? सो थैंक्स. अगर और भी ऐसी वीडियोस देखनी है और 10th की और 10th 11th और अदर क्लासेस की भी आपने वीडियोस देखनी है, सो प्लीज फॉलो माय चैनल सरल शिक्षा ऑनलाइन. सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉरवर्ड दिस टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली.
Thank you. Stay tuned.